Hello friends, let's learn something about Pradhan Mantri Awas Yojana, which is important for your prelims perspective. And we are going to deal with the eligibility criteria. So, the maximum age limit for the beneficiary is 70 years. The beneficiary should have a family that comprises of husband, wife and unmarried children. The beneficiary should not own a pakka house either in their names or in the names of any member of the family in any state of India. So किसी भी स्टेट में जो है उनके नाम कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए. Further, the income criteria is the annual income should be between 3 lakh to 6 lakh if the beneficiary is from LIG lower income group. So 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपका lower income group होता है. Then below 3 lakh you have economically weaker section. Okay, EWS जो है उसके अंडर फॉल करता है. So membership of one adult female member of the family is mandatory in ownership of the house. एक महिला का होना जरूरी है हाउस की ओनरशिप के अंदर. सो अगर हम नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नोडल मिनिस्ट्री जो है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट. द एर्स्टवाइल रूरल हाउसिंग स्कीम इंदिरा आवास योजना हैज बीन रीस्ट्रक्चर्ड इनटू प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण. सो इंदिरा आवास योजना को जो है रीस्ट्रक्चर करके प्रधानमंत्री ग्रामीण प्रधानमंत्री आवास योजना जो है बनाया गया है. सो इट एम्स टू प्रोवाइड पक्का हाउस विद बेसिक एमिनिटीज टू ऑल द हाउस होल्डर्स एंड दोज households living in kacha and dilapidated house by 2022. So target year is 2022. as you know 75 years हो जाएंगे हमारे इंडिपेंडेंस को. So cost sharing की अगर हम बात करें, so cost of the unit assistance in this scheme is shared between the central and the state government in the ratio of 60:40 in plain areas and 90:10 in north east and Himalayan states. तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 90% जो है पैसा देगी, और अगर नॉर्मल प्लेन एरियाज की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट 60% पैसा देगी और 40% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी. द स्कीम एनविसेजेस ट्रेनिंग ऑफ रूरल मैसन्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंप्रूविंग वर्कमैनशिप एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज while at the same time increasing availability of skilled masons and enhancing availability of such masons. So masons की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हो गया, इनको बोलते हैं मिस्त्री. So रूरल मैसन्स जो है रूरल एरिया में जो मिस्त्री होते हैं उनकी ट्रेनिंग की भी बात यहाँ पे की गई है. दैट एस्पेक्ट इज ऑल्सो कवर्ड. So selection of the beneficiary, if you see, it is based on the housing deprivation parameter of socio-economic caste census 2011, subject to 13-point exclusion criteria, and it is to be followed by the verification of ग्राम सभा. सो ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये वेरिफिकेशन ऑफ ग्राम सभा का जो क्लॉ है, इट मीन्स देर इज़ अ कॉम्पोनेंट फॉर पीपल पार्टिसिपेशन का भी यहाँ पे इन्होंने कॉम्पोनेंट रखा है विच इज़ इंपॉर्टेंट. ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, व्हेन पीपल आर पार्टिसिपेटिंग मीन्स देर विल बी अकाउंटेबिलिटी. अगर लोग पार्टिसिपेट करेंगे तो दे विल मेक श्योर दैट ऑफिसर्स आर अकाउंटेबल. वो क्वेश्चंस उठाएंगे, सवाल उठाएंगे, एंड ऑफिसर्स हैव टू facilitate the transparency. So at the end of the day आपका governance जो है वो improve हो जाता है. So to help rural people below the poverty line in construction of dwelling units and upgradation of existing unserviceable कच्चा houses by providing assistance in the form of full grant. तो यहाँ पे full grant जो है BPL लोगों को दिया जाएगा so that they can update their house from कच्चा to पक्का जो है वो update कर ले. So beneficiary की अगर हम बात करें, so beneficiaries are people belonging to SC ST, freed bonded laborers, non-SC/ST categories are also there, widows, next of the kin of defense personnel killed in the action, ex-servicemen, retired members of the paramilitary forces, disabled person, minority. So ये लोग जो हैं beneficiary बनाए गए हैं. Okay, so अब लेट्स लुक इनटू द प्रेजेंट स्टेटस. नाउ दिस इज द रीजन व्हाई इट इज इन न्यूज. प्रेजेंट स्टेटस की अगर हम बात करें, सो लेस देन 6% ऑफ द हाउसेज सैंक्शनड अंडर द सेंटर्स फ्लैगशिप रूरल हाउसिंग स्कीम इन 2021 हैव रीच्ड द कंप्लीशन. सो इस साल सिर्फ 6% हाउसेज जो हैं जो सैंक्शन हुए थे उनमें से वो कंप्लीट हो पाए हैं, विच इज रियली 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 लेस. ओके, सो ऐसा जो है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने बताया है. सो हाउएवर सम स्टेट सच एज ओडिशा, झारखंड use the scheme to provide employment opportunity for migrant workers who return to their villages during the crisis. So ओडिशा और झारखंड जैसे स्टेट्स ने जो है डेफिनेटली इसका फायदा उठाया है, और जो मजदूर जो है वापस आ गए थे उनसे जो है यहाँ पे काम कराया गया है. while a little over a year left to achieve the goal of housing for all, the प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण has completed only 55% of its construction target. So सिर्फ 55% की कंस्ट्रक्शन टारगेट उन्होंने एक तरीके से पूरा किया है. So this is the problematic thing. Other thing
थिंग इज दैट कोरोना इम्पैक्ट इज एवरीवेयर। ओके, कोरोना का इम्पैक्ट बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिला है, उस वजह से भी जो है कंस्ट्रक्शन रुक गया होगा। सो आपको वो भी यहाँ पे समझना होगा। सो ऑफ द 2.28 करोड़ हाउस टू बी बिल्ट फॉर रूरल पुअर अंडर द योजना, लेस देन 1.27 करोड़ हाउसेज हैव बीन कंप्लीटेड। तो ये बहुत ही कम नंबर है। अनदर 61 lakh आर अंडर कंस्ट्रक्शन। सो दिस स्कीम एज यू सी was launched in April 2016 and it aimed to provide पक्का हाउस with basic amenities to rural families. So ये एक तरीके से इसका ऑब्जेक्टिव था। टारगेट ईयर वाज मार्च 2022 which is about to come, वो आने वाला है। So according to the data provided in मिनिस्ट्री के अंदर 2019 के अंदर एक डाटा मिला था। So that says that average time to take to construct a house is 114 days. Okay, so अब जो है ये एकदम डिले होता हुआ नजर आ रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक। एज आई से, सो पैंडेमिक की वजह से ये जो है डिले हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लमैटिक थिंग। सो दीज आर द करंट डेवलपमेंट्स दैट यू नो अबाउट प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। थैंक यू वेरी मच।